Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Muhammad Yusuf. Today I'm going to talk a few things about the neonatal physiology, especially respiratory system. Today we are going to talk. But before that, one hadith. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, उनके इरशाद हैं, उनके अल्फाज हैं, इन औलन नास बिल्लाहि मन बदा बिस्सलाम। बेशक लोगों में ये सुनन अहमद, तिरमिज़ी और सुनन अबू दाऊद, 3 हदीस की किताबों में ये हदीस बयान हुई है। इन्ना औलन नास बिल्लाहि मन बदा बिस्सलाम, कि बेशक लोगों में अल्लाह के कुर्ब जवार और रहमत का ज़्यादा हक वो बंदा रखता है जो सलाम करने में पहल करे। सलाम में पहल करने पे अल्लाह पाक बहुत राज़ी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। एक और हदीस या फिर कभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह कि सलाम में पहल करने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है। अल्लाह पाक हमें इस पे अमल दे। ये कितना खूबसूरत निज़ाम है कि आप सलाम करने में पहल करें, लोग भी आपके नफ़रतें दूर होंगी आपसे पहले सलाम करें। अल्लाह पाक समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। So we will talk about the neonatal physiology, that is after birth transition to extrauterine life is going to take place. That when fetal organs are mature enough to survive independently, Allah has created this nizam for the delivery and the baby becomes independent. The organs, when jab tak immature hai, the baby is dependent upon the maternal metabolic support. So when it is mature, delivery occurs. We have discussed the process of parturition delivery. Connection with the placenta is cut after delivery. Then the dependence on the metabolic support from the mother is abolished. Now the baby has to survive independently. He has to use his own system organ physiology. Now change from the dependence to independence has to take place. The baby was dependent upon the maternal support. Now the baby is born and his life depends upon his systems. All the systems have to adopt. So all the systems are affected, most of the system. All the system, you can say, they are affected after birth. For example, circulatory system is very important. Changes occur in the circulatory system. We will discuss it. Then the respiration, which we are going to talk today. Respiratory system, baby doesn't breathe inside the womb of the mother. Baby is surrounded by that fluid. The oxygen requirement are fulfilled by the maternal blood. Elimination of carbon dioxide is through maternal blood. No role of oxygenation by the lungs of the fetus. So this change has to take place, respiratory change. And the temperature is also changes, and the digestive system also changes, and the immunity. The baby was in an sterile environment, sterilized environment. Sorry. No chance of infection there. And moreover, there were antibodies prepared by the mother and they were being transferred through the placenta to the fetus. So now the immune system of the baby should be active. It will become active. So we are going to talk about a few important things after birth. Respiratory system we are going to talk about. The fetal breathing movement takes place in the uterus, but they are feeble movement. They are the inspiratory or expiratory movement are not inspiration for inspiration. Only weak contraction of the inspiratory or expiratory muscle takes place, which is not capable of opening the lungs or expiration and expiration. There is no opening, inspiration, and there is no that is deflation. Now in utero, the lungs hold in uterus 25 ml per kg of fluid
maximum up to 100 ml. In lungs में fluid भरा पड़ा होता है, and that fluid, most of this is expelled during the birth process. When baby is being delivered, most of this fluid is expelled out of the lungs, and during the birth process, or the remaining is absorbed. या तो एक्सपेल हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है. लंग फ्लूइड जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता क्यों है? दिस लंग फ्लूइड इज टू हेल्प इन द सेलुलर प्रोलिफरेशन. जो लंग्स डेवलप कर रहे हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ द एल्वियोलर सेल्स. So cellular proliferation and differentiation in the utero, there is in this fluid environment. This fluid is necessary for that. At time of birth, the total number of alveoli, lung consists of primarily alveoli of the lung through which the oxygenation across the alveolar membrane takes place. There are 20 to 24 million alveoli in the baby, while in adults, number of alveoli is about 300 million alveoli in adults. So very small lungs, they are small. So there are the cells types in the alveoli are the same, which are present in adults as well. That is, there are two types of the cells, alveolar cells, or pneumocytes you can call them. That is, one is type 1 alveolar cells, which are responsible for the formation of that wall, pulmonary membrane through which the gaseous exchange takes place. Those are the alveolar type 1 cells. And then the alveolar type 2 cells, which produce and secrete the surfactant, that surface active agent which is responsible for the reduction in the surface tension of the fluid lining the alveoli. So this keeps the lungs open. If it is deficient, then the hyaline membrane disease we are going to talk about. So the type 2 alveolar cells are responsible for the production of this surfactant. So these two types of cells are present in this surfactant. What is surfactant? This surfactant contains phospholipids. You must have studied in respiratory physiology if you have studied it. So surfactant contains phospholipids which reduce the surface tension of the fluid lining the alveoli. Because if this surfactant is not present, those alveoli will collapse. So this reduces the surface tension so that the alveoli can remain open. So this prevents the collapse of the alveoli, as I said, and it is the production of this surfactant. This starts on the 23rd week of the pregnancy, middle of the pregnancy के बाद production शुरू होती है from the alveolar type 2 cells. अभी पिछली स्लाइड में हमने देखे. तो 23rd week of pregnancy में start तो हो जाता है, but most of it is produced in the last trimester, last 3 months of the pregnancy. ये half of the pregnancy है, तकरीबन half से ऊपर गया, 40 weeks ही होती है. So the production is increased from 32nd week. 32 weeks के बाद this production of the surfactant increases. That is maximum of 32 weeks. Last 2 months रह गए. That is the 8 weeks रह गए, 2 months. In last 2 months में maximum production of this surfactant. So that's why if there is birth of the immature baby, अगर immature baby पैदा होता है, proper gestation period 40 weeks का पूरा नहीं होता, 6 से 32 weeks पे viable होता है, otherwise fetus 32 weeks पे viable होता है. लेकिन there are chances of deficiency of surfactant in these fetuses. So the production is increased from 32 weeks of the pregnancy. Maximum production occurs in last 2 months. 32 weeks के बाद ये जो अब वो पैदा होगी, maximum production होगी. इसलिए sometimes if you have to perform cesarean section earlier than the 40 weeks, may cesarean section at 38 weeks, 36 weeks पे करना पड़ जाए. So then the gynecologists, they do give some steroids, injections of steroids for this helps to produce more this surfactant or alveolar type 2 cells activity को बढ़ाने के लिए steroids. So steroids are given for this purpose. So maximum production of surfactant occurs in last trimester of the pregnancy. Biosynthesis is affected by the temperature and pH, of course. The synthesis and production of this surfactant will be affected. Most of our chemicals, our enzymes, our production is affected by the pH of the environment and temperature of the environment. Now this is important.
how the onset of breathing occurs. That is initiation of the first breath, first cry of life, what we term as. That is compression of the chest wall during delivery and its recoil. What is the cause? We are लिखने किस वजह से इससे पहला सांस लेगा. Baby doesn't breathe inside the uterus. Delivery के फौरन बाद it has to breathe. इसने इंस्पायर करना है. First it has to inspire. Lungs are collapsed in the intrauterine life. They have to expand it, and expansion occurs on first inspiration. So inspiration has to take place. And as you know, for inspiration in adults as well, there is the creation of negative pressure, more negative pressure, intrapleural pressure, -4 जो आपने पढ़ा हुआ है. Normal negative pressure in the intrapleural pressure is -4. It will be more negative, and then inspiration will take place. In the fetus, very strong negative pressure is required to open the lungs. ये negative pressure पैदा होगा in the lungs, this will cause the opening of the lungs. So how this occurs? When baby is being born, this chest is being compressed by the birth canal, by the vaginal canal, by the birth canal, etc. It is being compressed, and when baby birth takes place, it is recoil of this expansion. Lungs इस तरह भी expand करेंगे, and negative pressure will be created. पहला काम तो ये है कि simply recoil of the lungs. पहले compress हुए थे during delivery process. This recoil will cause the more expansion of the lungs. Then during delivery process, lot of carbon dioxide accumulates. Second stage of labor, when strong contractions are taking place, blood supply from the maternal to the placenta is at risk. Very regular and very high frequency contractions are taking place. Period of relaxation has been shortened, especially in second stage of the labor. There are chances of the increased carbon dioxide and reduction in the oxygen level in the fetal blood. क्योंकि fetus को तो blood placenta से आ रहा है, वो contraction की वजह से obliteration is taking place. So very high level of carbon dioxide occurs, and this also contributes. That is, the carbon dioxide is very powerful stimulus for the respiratory center. So the chemoreceptors are stimulated by decreased oxygen and especially increased carbon dioxide. This causes the gasp reflex, strong inspiratory reflex. Then it is further aided by ये तो recoil है lungs का, then the nervous mechanism of the stimulation by the carbon dioxide, then there are sensory stimuli, other nervous mechanism. For example, baby is exposed to suddenly this cold and dry atmosphere. Baby was in the fluid, and that was not cold. Mother का body temperature warm. It was warm. Now it is exposed to cold, dry. That is cold and dry atmosphere. This also affects the skin. And from the skin, impulses go to the higher centers, and the inspiratory center is stimulated. Plus there is this cold, exposure to cold. This मैं वापस जाता हूँ lightning से पहले. Exposure to cold in adult life as well. If you open the shower, cold shower अपने body के ऊपर खोले, what is your reflex? Gasping reflex is there. ये बड़ों में, adults में भी मौजूद है. Exposure of the skin to sudden cold temperature causes gasp or strong inspiratory drive or signals. They are, so this cold, dry atmosphere causes the gasp reflex and the strong inspiratory reflex. Then baby is exposed to light. This light also affects somehow. That is exposure to light. उसको जब light पड़ती है तो उसकी वजह से भी some stimulation of the respiratory center occurs. And exposure to noise,
Baby was in the womb of the mother and calm and quiet atmosphere. Now the baby is in the labor room or in the noisy atmosphere. This also contributes toward the stimulation of the respiratory center. Plus, it is being handled by the daya. It is being handled by the doctor or some instrumentation or the nurse and the people around. So they are handling it. So handling of the baby also stimulates the respiratory center. So mostly the baby just after birth takes the first cry of life or the first inspiration starts. ये immediately start होती है. Mostly it immediately start. घरों में बच्चे पैदा होते हैं. Mostly they inspire और वो रोने लगते हैं. That's why that is known as first cry of life. That is cry of life. So these are the different stimuli which cause the strong inspiratory signals to the respiratory center of the baby and very strong inspiration occurs. Very strong. उसको हम देखते हैं कि कितना 3 दफा very strong inspiratory signal क्यों कह रहा हूं. Now collapsed lungs require more than 25 millimeter of negative pressure. हमारा कितना चाहिए? Just 4 millimeter. -4 होता है, -6 is sufficient for our inspiration. आपने पढ़ा हुआ है रेस्पिरेटरी सेंटर. अगर रेस्पिरेशन आपने पढ़ी हुई है तो दिस इंस्पायरेशन रिक्वायर्स ओनली -2, -4 से -2. दैट इज सफिशिएंट फॉर द ओपनिंग ऑफ आवर लंग्स. But the lungs collapse, baby's lungs are collapsed, they require very strong negative pressure. Negative pressure होगा, expansion will create negative pressure, then the lungs will open and air will rush into this negative pressure. So the collapsed lung, they require कितना pressure? 25 millimeter of mercury pressure चाहिए. तो बंद पड़े हैं, उनको खोलना, खींच के खोलना बड़ा मुश्किल काम है. खुले हुए लंग्स को तो थोड़े ऊपर नीचे करना कोई मुश्किल काम नहीं है. तो ये बंद पड़े लंग्स को 25 millimeter of negative pressure is must for the opening of the lung for the first time. First inspiration of normal neonates can create कितना चाहिए तो इतना, लेकिन यूजुअली फर्स्ट इंस्पायरेशन ये जो पिछले सिग्नल्स हमने कहा है, रिकॉइल और दी कोल्ड एटमॉस्फेयर और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, जो भी हमने इंस्पिरेटरी स्टिमुलाई हमने देखे, दे कैन क्रिएट गैस्पिंग रिफ्लेक्स व्हिच कैन क्रिएट -60 millimeter ऑफ नेगेटिव, -60 millimeter ऑफ मर्करी प्रेशर नेगेटिव माइनस. So this will open the lungs. ये वो pressure है which will cause the opening of the lungs in rush of the air into that, and then baby will expire in the form of crying. वो inspire करेगा, फिर जो वापस air जाएगी that will cause the cry. So it will create -60 millimeter of negative pressure, and after first expansion, ये पहली expansion जब होगी -60 millimeter of mercury, अब much less pressure will be required. अब बहुत कम pressure चाहिए होगा. So after first expansion, much less negative pressure is required for the expansion of the lungs. इसको हम आगे देखते हैं. Normal respiratory pressure जो हमारा है वो -4 और -6 वाला, that is gradually achieved in about 40 minutes. ये आस्ता आस्ता, पहला तो बहुत negative pressure चाहिए, फिर आस्ता आस्ता कम negative pressure चाहिए, फिर gradually after about 40 minutes the respiration of the baby is easy respiration. ये तकरीबन 40 मिनट लगते हैं उसको सांस ठीक होने में. Now we are going to discuss the compliance curve. If you have studied respiratory physiology, the lung compliance curve you must have studied. We are going to plot that curve for baby, for the newborn baby. This first pressure inside the lungs is 0. बंद पड़े हैं, वहां कोई प्रेशर नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव. दे आर कोलैप्स लंग्स. वहां ना पॉजिटिव प्रेशर है ना नेगेटिव प्रेशर है. अब उसको इन कोलैप्स लंग को खोलने के लिए अराउंड दीज लंग्स वेरी लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड. वो 25 millimeter ऑफ मरकरी, -25 तकरीबन यहां पे कहीं आएगा. So strong inspiration, that is the contraction of the inspiratory muscle, जिसमें डायफ्राम सबसे बड़ा है. तो इंटरकॉस्टल मसल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और मसल इंस्पिरेटरी मसल आपने पढ़े हुए. सो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल विल क्रिएट नेगेटिव प्रेशर. इट विल बी इंक्रीजिंग. यू सी देयर इज नो वॉल्यूम. ये ऊपर वाले ऊपर क्या है? वॉल्यूम इन द लंग. लंग में कोई वॉल्यूम नहीं है. देयर इज नो एयर. ये 0 millimeter मर्करी प्रेशर कोलैप्स लंग में, देयर इज नो एयर. अब नेगेटिव प्रेशर, अब पहला सांस
इंस्पिरेशन शुरू किया उसने. Strong contraction of the muscle is causing negative pressure. It is going from -0 to +5, +10, +20, +30, +40 पे ओपन करेगा. About +40 पे there will be some opening of the lungs and air will enter. Now the graph is going up. ये baseline 0 line से ऊपर जा रहा है. That means air is entering. Now air is entering, pressure is still inspiration is taking place. Inspiration is going on and it is decreasing the pressure to -60 millimeter of mercury. अब इतना volume आ गया, that is ये ml लिखा हुआ है, about 40 ml या 35 ml के करीब air has been filled into the lungs. तो ये पहली ब्रीदिंग जो उसने ली है, इंस्पायरेशन जो उसने की है, वेरी नेगेटिव प्रेशर ऑफ -60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर क्रिएट हुआ है और तब उसने ये 35 ml ऑफ एयर इनहेल किया फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ इसको एक्सपायर करना भी है, एक्सपायरेशन भी करना है. एक्सपायरेशन के लिए पॉजिटिव प्रेशर इज रिक्वायर्ड. दिस उसको expiratory muscle should contract, diaphragm should go back and the lungs diameter should reduce to create positive pressure. Now the pressure is increasing from 60 but still no air is leaving. इतना प्रेशर नहीं है कि उसको बंद कर सके, and it is increasing and it has gone to about +40. उधर भी नेगेटिव प्लस नेगेटिव किया है और इधर भी +40 तक लेके गया प्रेशर. देन द एयर विल बी एक्सपायर्ड आउट. एक्सपायरेशन फिर शुरू होगी, फिर प्रेशर भी कम होता जाएगा एंड तब वो दोबारा 0 पा जाएगा. That's how the first inspiration and expiration takes place. क्या हमने देखा लंग, दिस इज लंग कंप्लायंस. मैं अभी बताऊंगा लंग कंप्लायंस आगे आएगी. यू रिमेंबर दैट कर्व, वो कर्व आपको याद होनी चाहिए, लंग कंप्लायंस कर्व. मैं पहले दिखा देता हूं. This is the lung compliance curve in the adults. That is -4 millimeter of mercury पे जब negative pressure होता है, -6 पे it is inflated. Inspiration has taken place in this 2 millimeter of mercury change pressure. प्रेशर चेंज हुआ है, that has gone to this and the expiration वो भी जल्दी हुई है, थोड़ा सा नेगेटिव किया है, it is gone to. This is the lung compliance diagram of the adult lungs. और बेबी का कैसा है? Now ये पहले ये वो lung compliance diagram है. That is this much negative pressure has opened the lungs and now the expiration is also difficult. And expiratory muscle contract कर करके इतना पॉजिटिव कि +40 के करीब ले गए. So the +40 के करीब then the deflation of the lungs or expiration takes place और तब air बाहर निकल गया and it goes to again the 0 level. So this is very strange lung compliance, first breathing की lung compliance करना. और अगली देखें, this is the second breath, this is quite easy. Now the negative pressure अब थोड़ा सा बड़ा है, that is यहाँ से थोड़ा सा हुआ है, -10 हुआ है, -15 हुआ है तो air enters into it और -40 पे काफी और काफी सारी air दाखिल होगी, तकरीबन उतनी दाखिल होगी जो उसका इन्फ्लेट कर सकती है. एंड वापसी भी इतनी मुश्किल नहीं है, 40 पे नहीं आए, यहाँ पे भी loss of air, deflation of the lung takes place. So this is, and again after 40 minutes, this is the lung compliance diagram. नॉर्मल लंग कंप्लायंस डायग्राम. ये नॉर्मल है, ये एडल्ट की तरह है. मैं बताता हूँ एडल्ट की तरह कैसे है. इसका स्केल बहुत बड़ा है ना. ये जो लंग कंप्लायंस एडल्ट वाली अभी दिखाई है, मैंने दोबारा दिखाता हूँ. उसका स्केल 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तो इतना सा है. तो ये लंग कंप्लायंस डायग्राम. सो दी आफ्टर 40 मिनट्स दी कंप्लायंस लंग कंप्लायंस डायग्राम इज लाइक एन एडल्ट. ये 40 मिनट्स के बाद ये फर्स्ट इंस्पिरेशन. दिस इज लंग कंप्लायंस डायग्राम. ये तो नॉर्मल है. आप ये स्केल देखें ना, उसका स्केल तो इतना में 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तो इतनी जगह पे दिखाया हुआ है. ये मैंने इसको इसी को रिड्यूस करके दिखाने की कोशिश की है. वैसे लंग कंप्लायंस डायग्राम जैसे बेबी में वो 40 मिनट्स के बाद ये तकरीबन ऐसी है. तो onset of breathing, this is the first inspiration and the gradually adult inspiration की तरह smooth inspiration and expiration will be taking place with the only 2 millimeter of mercury decrease or increase pressure will be causing inspiration and expiration. इस किस्म की कर्व मैं दोबारा इस पे वापस जाके देख लें. दिस इज ये वही कर्व है जो उसकी मैंने बड़ी स्केल बड़ा कर, ये स्केल को छोटा करके दिखाया उसने, उसी स्केल को. सो दिस इज द लंग कंप्लायंस डायग्राम ऑफ द एडल्ट
almost adult. So after 40 minutes, ये inspiration and expiration becomes easy. That is only -4 से -6 हो जाएगा, इंस्पायरेशन हो जाएगी और वापस -5 पे जल्दी से एक्सपायर कर देगा, -4 तक आते आते एक्सपायर कर देगा, एक्सपायरेशन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह का यही काम होने लगा एडल्ट्स में। सो दैट्स हाउ द ऑनसेट ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट चेंज आफ्टर द फर्स्ट चेंज। दिस इज रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन के बगैर आगे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर पॉसिबल कैसे है लाइफ। सो दैट्स हाउ द इंस्पायरेशन टेक्स प्लेस। So ongoing respiration, then it is easily, that is very powerful inspiratory effort initially required to overcome the resistant forces of the tissues and the viscosity of the lungs and the fluid जो उसमें भरा पड़ा है, and then the respiration gradually becomes smooth and easy as for adults की तरह होती जाती है। However, एक फर्क रहता है, बेबी में रेस्पिरेटरी रेट इज वेरी हाई। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि नंबर ऑफ एल्वियोलाई भी हमने बात कर ली है, छोटे छोटे लंग्स हैं जिन्होंने भरना है और ऑक्सीजन सप्लाई करनी है उस बेबी के पूरे टिश्यूज को, तो इसलिए रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करके पल्मोनरी वेंटिलेशन को इंक्रीज किया है। सो रेस्पिरेटरी रेट इन द नियोनेट्स इज 30 to 40। एडल्ट्स में तो 12, 14, 16 होती है ना respiratory rate. So the respiratory rate in the neonate is 30 to 50 breaths per minute. Respiratory rate ज़्यादा होता है। If delayed breathing, जैसे हमने कहा कि mostly the breathing occurs just after delivery. Delivery के फौरन बाद baby should breathe and usually it breathes. अगर breathe न करे, उसके causes क्या होते हैं? पहले तो causes देख लें। Delayed breathing आमतौर पर अगर मदर को एनेस्थीसिया दिया है, तो दिस एनेस्थीसिया आमतौर पर आप देखें डिलीवरी में एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, कभी जरूरत पड़ जाए, इतनी पेनफुल कंडीशन हो, सिजेरियन करते हुए भी तो एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल भी देते हैं। एनेस्थीसिया दिया जाएगा या ट्रामा टू दी हेड ड्यूरिंग पार्टुरेशन। दूसरा काज ये हो सकता है, इंपॉर्टेंट काज ये हो सकता है बेबी का, ड्यूरिंग डिलीवरी में अगर बेबी के हेड को कोई ट्रामा हो गया, इट मे डैमेज दी ब्रेन एट दी दैट टिश्यू, न्यूरॉनल टिश्यू, अगर रेस्पिरेटरी सेंटर भी ब्रेन का हिस्सा है, सो दिस मे कॉज डिलेड ब्रीदिंग। और हाइपोक्सिया ज्यादा हो गया, यूट्राइन कंट्रैक्शन इतने स्ट्रांग हुए हैं या डिलीवरी प्रोसेस इतना डिफिकल्ट हुआ है कि हाइपोक्सिया है प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जैसे मैंने पार्चुरेशन वाले लेक्चर में डिस्कस किया था ना, इफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज प्रोलॉन्ग्ड देन देयर आर चांसेस ऑफ द हाइपोक्सिया एंड इट मे डैमेज द टिश्यूज, हाइपोक्सिया मे डैमेज। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ द डिलेड ऑनसेट ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग पहली मुश्किल हो जाए, एनेस्थीसिया ऑफ द मदर, वो क्या करती है, पार्शियल एनेस्थीसिया टू द फीटस, फीटस को भी एनेस्थीसिया तो जाएगा, मदर को दिया तो वो ब्लड के जरिए से बच्चे को भी जाएगा। एंड रेस्पिरेटरी सेंटर में बी डिप्रेस्ड, तो रेस्पिरेटरी सेंटर तो चाहिए फॉर दी स्टिमुलेशन बाय दी ऑल दो स्टिमुलाई जो हमने डिस्कस किए, कोल्ड और दी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है। सो दिस विल कॉज द रेस्पिरेटरी suppression of the respiratory center, depression of the respiratory center, or trauma to the head that causes the intracranial hemorrhage or may cause damage to the brain itself, and उसमें भी respiratory center खराब हो सकता है। और prolonged hypoxia is stimulant, hypercapnia is stimulant primarily, hypercapnia is stimulant, but compression of the umbilical cord for longer duration or premature separation of the placenta, अभी बेबी डिलीवर नहीं हुआ, प्लेसेंटा किसी वजह से सेपरेट कर रहे, बिकॉज यूट्राइन कंट्रैक्शन कॉजेस शेयरिंग इफेक्ट, हमने डिस्कस किया था प्लेसेंटा की डिलीवरी में, शेयरिंग इफेक्ट एट द प्लेसेंटल साइट। सो द premature separation of the placenta or excessive uterine contraction, इसमें भी obliteration of the blood vessel to the uterus उसकी वजह से हो सकता है, and excessive anesthesia, वो ये भी बात कर चुके। all these are the causes of delayed onset of breathing, आमतौर पर इस वजह से होता है। now the कितनी देर तक ब्रीदिंग ना करे बेबी तो खैर है, बच जाता है। एडल्ट्स में हमें failure to breathe for 4 minutes, more than 4 minutes is definite death। 4 मिनट से ज्यादा सांस अगर किसी का रुक जाए, that is death। एडल्ट्स में कहाँ आप सांस कितना रोक सकते हैं? आप 1.5 मिनट तो रोक के दिखाएं। ये कारी हजरात जब 1.5 मिनट तक सांस रोकते हैं तो हम कितनी वाह वाह करते हैं।
सो दी 4 मिनट अगर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन अगर रुक जाए, रेस्पिरेशन रुक जाए एडल्ट में, इट कॉजेज डेथ विद इन 4 मिनट्स। नियोनेट्स अल्लाह ने उनका निज़ाम जरा अलग रखा है, कैन टॉलरेट एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग अप टू मैनी मिनट्स, डेथ मैक्सिमम 10 मिनट्स लिखा हुआ है, मैक्सिमम अप टू 10 मिनट्स दे कैन टॉलरेट ब्रीदिंग, उसको रोक से। बट डिलेड अगर इतने 10 मिनट्स तक ब्रीद हो, आफ्टर 8 मिनट्स, मोर देन 8 मिनट इज डेंजरस। सर्वाइव तो कर जाएंगे 10 मिनट्स के बाद, अगर ऑनसेट ऑफ ब्रीदिंग हो जाए सर्वाइव, बेबी विल सर्वाइव, बट दैट 10 मिनट डिले may cause the damage to the brain. So but delayed breathing for more than 8 minutes will cause permanent brain damage, और उसको डैमेज हो जाएगा उसमें, तो there will be damage to the brain. So उसमें अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ है कि 8 मिनट से पहले 6 मिनट पे 5 मिनट तक भी अगर ब्रीद ना करे, सहनोज हो जाता है, लेकिन आप उसको आप देखेंगे प्रैक्टिकली, इट इज़ प्रैक्टिकल, जब आउट ऑफ आवर स्कोप है, क्योंकि हमने तो फिजियोलॉजी पढ़ानी है। प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे कि ऑनसेट ऑफ ब्रीदिंग के लिए क्या कुछ लेबर रूम में किया जाता है या बेबी के साथ क्या किया जाता है, उसको रुलाने के लिए, उसको स्टिमुलेशन के लिए। लास्ट आखिरी बात हमने आज ये करनी है, सर्फेक्टेंट जो हमने डिस्कस किया था, प्रोड्यूस बाय द एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स, दैट इज मस्ट। अगर उसका लेवल कम हो, दे ब्रीदिंग स्टार्ट भी हो जाए, लंग्स में कोलैप्स अगेन। ये जो ऑनसेट ऑफ ब्रीदिंग हमने देखी है, दे मे कोलैप्स इफ द सर्फेक्टेंट इज नॉट देयर। द सर्फेक्टेंट कीप्स द एल्वियोलाई ओपन, वो दैट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड। अगर सर्फेक्टेंट ना हो, देन दे विल कोलैप्स अगेन, और उसको दोबारा खोलना मुश्किल, वही मुश्किल वाला सांस होगा। वो तो हमने कहा पहले सांस के बाद ग्रेजुअली ठीक हो जाता है अगर सर्फेक्टेंट मौजूद है। अगर सर्फेक्टेंट मौजूद है, लंग विल अगेन कोलैप्स। So the respiratory distress syndrome occurs if there is there is a decreased surfactant level. So deficiency of surfactant will cause deficiency of alveolar type 2 cells. Cause of this is, and diabetic mothers में भी deficiency of surfactant हो सकती है, and the are premature baby, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, this surfactant is produced mostly in the last part of the pregnancy. Prematurity होगी, chances of the deficiency of surfactants will be there. So severe respiratory distress occurs. उसका सांस लेना मुश्किल, हर दफा उसको -40 या -60 वाला प्रेशर चाहिए टू ओपन देम। So this is very difficult. So this severe respiratory distress occurs and usually death occurs. अगर ये बहुत surfactant बहुत कम हो, death can occur. So alveoli contain proteinous fluid, और उसकी surface almost, और इसमें death हो जाए तो alveoli are filled with the proteinous fluid, उसमें fluid भरा होता है, surfactant नहीं होता, and the almost plasma like leakage in the alveoli में। और उसकी अगर आप हिस्टोलॉजी देखें तो इट इज लाइक अ हाईलैंड मेम्ब्रेन। वो हाईलैंड मेम्ब्रेन, इसलिए इस डिजीज का नाम हाईलैंड मेम्ब्रेन डिजीज भी है, ये नाम के बजाय रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बेबी को। तो इसके लिए दिस इज डेंजरस, इसलिए दैट्स वाई अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी का चांस हो तो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन के लिए स्टेरॉइड्स आमतौर पर दिए जाते हैं। सो दैट्स आज के हमारे स्कोप में इतनी बात है। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी हमने पढ़नी है, नेक्स्ट टाइम हम और बात कर लेंगे सर्कुलेटरी एडजस्टमेंट। Probably that will be the last lecture on reproduction. We will discuss the circulatory adjustment, very important changes. The respiratory changes तो एक lungs का open हमने discuss किया, very important changes we will discuss in next lecture inshallah taala. That is circulatory adjustment after birth. So hope you are following me, and please do subscribe and share this video to the rest of the students for Sadqa Jariya. And if you have got some queries, questions, you can ask in my comment section. Thank you very much.